Okay, ji. So we first of all discuss today's lecture outcomes, in which we will be discussing a new topic for which we felt the requirement in the previous lecture session, that we will try to focus upon this topic mainly, and then we will see what we can cover in the later portion of our lecture. We discussed previously that if we want to, let's take the real world example again. For in a company there is an employee, you want to save the record of that employee in your database, in your data structure. In simpler words, the record contains the name of the employee, the number of the employee, the salary of the employee, the age of date of birth of the employee, so on and so forth. So can you save this record in an array? Not in a singular array, isn't it? Because array can only contain integers or characters or array of characters. But a company record, employee record, it's something which is alphanumeric in nature. It contains strings, it contains integers, all this type of information. Same goes for a particular student record. Name of the student, gender of the student, CGPA of the student, courses of the students, date of birth of the student, so on and so forth. So can we save this thing in, not in a singular array, in a single array? Can we save it in multiple arrays? Yes. Of course, there is a possibility, but that would be very cumbersome. We are not talking about limited number of students in this class or couple of classes or in a department or in a college or in a university. So if we are managing data in bulk, so can we manage all those arrays containing this much of information, that on the very first index it's the registration number, then the next array on the very first index it's something else related to that student, let's suppose syndicate of that student, so on and so forth. So it will become definitely very cumbersome and almost not manageable. So we need to have such a container, array is such a container which is homogeneous in nature, which can only save integers, which can only save characters, which can only save strings or any other singular type of data. But we need such a container which can contain this type of data related to a student. तमाम डेटा हम उस कंटेनर में डाल दें. Related to a कंपनी एम्प्लॉय, तमाम डेटा आप उस कंपनी एम्प्लॉय का उस कंटेनर में डाल दें. सच अ कंटेनर इज एक्चुअली कॉल्ड स्ट्रक्चर. So structure, by definition, structure is a collection of related data items, possibly of different data types. Why related? Related क्यों है जी? Because everything belongs to that student. Data is diverse in nature. Data contains integers, characters, booleans, doubles, CGPA, everything. So different types of data, but it's related. Related means it belongs to that student. That data belongs to a company employee. That data belongs to a patient in a hospital. So structure in C++ is called struct. Struct is now a keyword. We use this keyword to create a structure. Structure is heterogeneous. Now, if array is homogeneous, structure is heterogeneous. Such a container, it is composed of different types of data. Whereas in contrast, array is homogeneous since it contains only similar type of data, means only integers or only characters, as we have done previously. Array of integers, array of characters, strings. So structure की related data की जो example है वो आप ये देख सकते हैं. Student record, student ID, name, major, gender, start date. It's your own created structure. Whatever you think it is applicable on a majority of students, you just make part of that.
क्या ये सब बातें ठीक है नहीं किसी भी स्टूडेंट के लिए? नॉट ओनली दिस कॉलेज बट फॉर द होल universities of Pakistan. These are true. Generic. So structure is something which is very generic in nature. Bank account, account number, name, currency, balance, etc. Address book, name, address, telephone number, etc. So in database application, it's added information. We call structure records. So in computer engineering, we study databases. So over there, we correlate it with the other and another name as records. So individual components of structure. Now, जो structure के आपके पास variables हैं, the variables of structure which you declare, name of a student, ID of student, registration number of student, CGPA of student, gender of student, semester of student, courses of student, these are all called members. Actually, these are variables, but we have a more formal name. If we are talking about structures, we will talk about members of that structure. Members can contain different types of data. Of course, that's why we are studying this. Simple array, array of structure, so on and so forth. आगे complex programming भी इसमें हो सकती है. A structure is named as a whole while individual members are named using field. That means हर एक का अपना नाम है. Of course, student के name का हम अलग से अब आगे चल के example देखते हैं. और of course, complex data structures can also be made with this example. Just to pictorially display, this is something which is an array. Same type of data, isn't it? And this is something belongs to employee of a company. Diversity in the data. Name, but everything belongs to that employee. But the data is diverse in terms of data types. So this container is a structure, this is an array. ये आप देख सकते हैं records are also grouped related items together. Components of a record are called fields. ये वही added information है. Actually in C++ records are called structures. For example, you open a shop of spare parts. You create a structure of parts, generic parts, of course related to that car. Now the car parts could be old, could be new. So I will like to create a structure, struct, part struct. So I will create this structure. The name of the structure is part struct. It will start from this curly brace, it will end this curly brace with a semicolon. Yes, structure is. Now these things are true for every part, either new or old, isn't it? Description of the part. Now we will see arrays being utilized as part of structure. Character array पढ़ा हमने last time. Character description 31. Part number 11. The price of that part. Quantity of that part. So we can see the diversity in data types over there, isn't it? Belongs to this part structure. Now how to drive this? Actual task is that we have created a structure which is true for every part in the spare shop. First of all, we will differentiate between old part and new part. Actually, I would like to comment over here that we are in the process of creating our own data type. By utilizing the word data type, I mean that if we write int a, this is the data type and this is the variable we create. Likewise, over here, using part underscore struct, I will create a variable, let's suppose old underscore part. It's a variable. Just like this. If we have this thing available to us, this is how we create our own data type, isn't it? Now how to establish the link between this old part? अब इस old part के लिए क्या ये सब चीजें true हैं कि नहीं? Now how to establish the link between this old part and its description, or let's say quantity? So I will write old part dot what is the name? QTY equal to 5.
This is how I will establish it with every data member available over here. आगे देखते हैं diversity of data types. Now we have a structure which is a generic entity which is true for every part. I have created variables for this structure, new part, comma, old part, just like int a comma b semicolon. So I have created these variables over here. Now how to drive this? For example, in order to update this for this old part, this quantity, I will be writing old part dot quantity equals to 5, new part dot description जो भी हमने इसमें दी. तो ये हमने थोड़ा आगे भी चल गए. अभी हमने फोकस करना है सिर्फ स्ट्रक्चर पे. हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्राइव इट वुड बी द नेक्स्ट पार्ट. तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दिया कि आगे फर्दर ये किस तरह चलेगा. क्वांटिटी ऑफ कोर्स विद अ डॉट. दिस इज हाउ वी एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन आवर क्रिएटेड वेरिएबल एंड द स्ट्रक्चर इटसेल्फ. दिस. नाउ लेट्स see different type of structures, our own created structures. It's purely a user defined area where user can define. ये लास्ट में उठा दें जी जरा, उठ दें को भी उठा दें. अच्छा ये देख लें जी, ये स्ट्रक्चर का ओवरऑल सिंटेक्स है. स्ट्रक्ट टाइप, टाइप मीन डाटा टाइप. इसको सिंपल वर्ड में अगर समझाना चाहूँ तो एंड पे ये ख्याल रखें इसमें सेमीकोलन आता है. This is a generic structure. We have a date, means what date includes actually on the calendar, day, month and year. Integer में हमने एक let's suppose एक structure define कर दी by our own ourselves, a structure. You can see the syntax, way of writing, the inclusions of the structures. Student info का structure हम बनाना चाह रहे हैं. ID, age, gender, CDB. You can see such a container which contains different types of data which relates to this student. Grade structure, name, course, lab, homework, exam. Such a structure which belongs to this particular student. We will see हम इसको 50 students में मैप किस तरह करेंगे. वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे. पहले एक जेनेरिक एंटिटी बनाएंगे, उसके बाद इसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे एंड विद दीज वेरिएबल्स विद द डॉट ऑपरेटर हम लिंकेज एस्टैब्लिश करेंगे. तो अभी आप फोकस करें हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर. बैंक अकाउंट, नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये क्या है. अभी हम थोड़ा सा आगे चलें 3 to 4 स्लाइड्स, देन वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड. इसको अभी रहने दें स्ट्रक्चर को कि ये किस तरह क्रिएट हुआ है, क्या ये एरर है और दिस इज ओके टू इम्प्लीमेंट. ये एक्चुअली जो पीछे हमने डेट का स्ट्रक्चर बनाया था उसका वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके लिए अभी हमने थोड़ा सा नॉलेज वी हैड टू सीक. जस्ट फोकस अपॉन दिस. आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज अपकमिंग एग्जांपल इज फोकसिंग अपॉन दिस structure. Struct student record. Student record is the name of the structure, and we have how many inclusions in this as members? 4. It could be 10, it could be 15. It depends upon your requirement. Name, ID, department and gender. Now how to save this record for each student in this class? ये तो आपने एक जेनेरिक एंटिटी बना दी स्टूडेंट रिकॉर्ड की. अब फर्स्ट स्टूडेंट के लिए मैंने फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स के लिए लेट्स सपोज मैं वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं. मैंने 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है. व्हाट आई नीड टू डू? पहले तो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं. स्टूडेंट रिकॉर्ड स्पेस स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2. लूप अभी छोड़ दें. सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर आपने जेनेरिक एंटिटी बना ली. वी हैव क्रिएटेड दैट. नाउ इट्स अ डाटा टाइप. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आवर ओन डाटा टाइप. लेट्स सपोज वी हैव क्रिएटेड इट स्टूडेंट
रिकॉर्ड स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2 वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। जो भी नाम देना चाहें, स्टूडेंट 1 कंप्लीट लिख लें या 2 लिख लें, जिस तरह भी हम नाम देते हैं। एज सुन एज आई हैव क्रिएटेड दीज वेरिएबल्स, लेट्स सपोज स्टूडेंट 1 पूरा नाम दिया, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 मेमोरी की स्टेट आपके सामने, पूरा स्ट्रक्चर उनके क्रिएट हो चुके हैं दोनों स्टूडेंट्स के। इससे आपने ड्राइव करके स्टूडेंट 1 जब लिखा, इन द बैक एंड दिस स्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड। दीज वर द 4 इंक्लूजन्स, इजंट इट? आप उसमें 10 कर दें, 10 मेंबर्स का स्ट्रक्चर और स्टूडेंट 1 क्रिएट हो जाएगा सिर्फ वेरिएबल क्रिएट करने से। जस्ट बाय क्रिएटिंग वेरिएबल स्टूडेंट 2 का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। नाउ वी नीड टू फिल देम अप। हाउ? स्टूडेंट 1 डॉट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट आईडी, स्टूडेंट 1 डॉट जेंडर, स्टूडेंट 1 डॉट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट 2 डॉट नेम, आईडी, जेंडर, स्टूडेंट 2 डॉट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल इट। So let's fill it. Previous lecture से string copy याद है? Yes, sir. कुछ याद है जी? लास्ट टाइम हमने string copy पढ़ा था। strcpy, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। इस एरे का डाटा D में कॉपी हो जाता है। Whatever you write over here get copied to this location. So whatever you write here as a string literal or as an array, it get copied to student 1 dot. वो देख लें वहां पर नेम पे ये चीज प्लग हो चुकी है। student 1 dot id, student 1 dot gender, student 1 dot strcpy, department, comma whatever the department is, computer मैकेनिकल जो भी आपका इनपुट हो जाएगा फॉर दिस स्टेप। student 1 dot gender, इधर से एक सिंपल सा स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर मिस्टर लगाना है, मिस जिसको सिलेक्ट कर लेगा, अकॉर्डिंगली आपका ये पूरा रिकॉर्ड फॉर दिस स्टूडेंट सेट हो जाएगा। अब ऑफ कोर्स people will be having in your mind where to actually create the structure, inside main, before main. So next slide will actually explain this concept. Struct student record before main. At the top, any number of structures you want to create. Student name, character name, ID, department, gender. Inside main, you create variables. Student record का जी, student 1 बात नहीं करी हुई। strcpy student 1 dot name, ठीक है, जो भी नाम है, student 1 dot ID, डिपार्टमेंट, जेंडर, ठीक है। वो जो भी जेंडर यहां पर केस ट्रू हुआ वहां पर लग गया, आप डिस्प्ले कर देने, ये आपका स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड सेव होगा। क्यों जी, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्या आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं उतने स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते, उतने एलिमेंट्स के, मगर प्रॉब्लम तो वही है कि कितने वेरिएबल क्रिएट करें। ये तो 2 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में कितने हैं स्टूडेंट, तो क्या करें? लेकिन आज आपने आंसर पहले दिए, एरे लगाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था जब हमने एरे स्टार्ट करने थे कि 50 स्टूडेंट्स का डाटा प्रोसेस करना है, कितने वेरिएबल क्रिएट करेंगे? 50 तो नहीं कर सकते ना। एस ऑफ 50, अगर एस आई 0 है, ये कौन सा स्टूडेंट है? फर्स्ट स्टूडेंट, डॉट आईडी। एस 1 है, आई 1 है, सेकंड लूप में लगा। तो जस्ट फॉर राइटिंग दिस आपके 50 स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुके हैं फॉर 50 स्टूडेंट्स। यू जस्ट नीड टू एंटर द डाटा एंड योर रिकॉर्ड विल बी सेव्ड। ठीक है, actually this will be very helpful if someone wants to implement in their projects as well, ठीक है। तो अच्छा आगे देखिए जी, तो ये आपने देख लिया कि where we have to implement।
ओके, इफ यू वांट टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन स्ट्रक्चर टू अनदर, एरे के कंटेंट्स को आपने कॉपी करने हैं तो आप क्या करते हैं? इंटीजर एरे के, एरे ए है, एरे ऑफ इंटीजर्स, उसके कंटेंट्स को आपने एरे बी में कॉपी करना है, लूप लगाते हैं ऑफ कोर्स, एलिमेंट बाय एलिमेंट दूसरे में कॉपी होती है। एरे ऑफ कैरेक्टर्स है तो चलिए आप स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, strcpy या strncpy। स्ट्रक्चर में एक आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, स्टूडेंट 1 का डाटा उसमें फिल किया है, 50 फील्ड्स थे उसके, .id, .name, .cgp, ये सब कुछ। आप चाहते हैं इसका रेप्लिका एक और क्रिएट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? ये लेट्स सपोज आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, नेम, आईडी, डिपार्टमेंट, जेंडर। यू वांट टू क्रिएट एग्जैक्ट द रेप्लिका ऑफ द स्ट्रक्चर, जस्ट इक्वेट स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू स्टूडेंट 1, ये पूरा रेप्लिका हो जाएगा इक्वेट करने से, जस्ट लाइक यू इक्वेट द वेरिएबल्स। जिस तरह वेरिएबल, लेट्स सपोज ये वेरिएबल है, स्टूडेंट 1 की वैल्यू कहां चली जाएगी? स्टूडेंट 2 में। सिमिलरली स्टूडेंट 1, every content of the structure will be assigned to student completely। ये भी इसमें एक एड ऑन बेनिफिट है। ये आप देख सकते हैं कि आपने थोड़ी सी लेट से अमेंडमेंट करनी है, आपने एक स्टूडेंट 2 आपने बना लिया, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको इक्वेट किया, थोड़ी सी अमेंडमेंट की यहाँ, और ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली उसने उसको पिक कर ली एंड इट्स डन। ठीक है, मुझे कोई समझ आ रही है? स्ट्रक्चर्स इंटरेस्टिंग लगा आपको ये बात? स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली इफ कंबाइंड विद फंक्शंस तो बहुत काम की चीज है, और मगर क्विज़ेस में शो नहीं करते आप लोग है नहीं? बिल्कुल, क्योंकि क्विज तो आपको बड़े बेसिक मैंने उससे लिया था, और पास बाय वैल्यू का क्विज था। दूसरे सिंडिकेट को तो मैंने पास बाय रेफरेंस दिए, क्योंकि वो उनका पहले हो जाता था ना क्विज। तो इस दफ़ा मैंने आपको ये चीज़ जो है ना, तो होगी अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, वेरी इंटरेस्टिंग। इसको हम स्टार्ट करते हैं और देन वी विल हैव अ ब्रेक। एक्चुअल इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि आपने एक पॉइंट बनाना है जी, ग्राफिकल। देखें जी जरा, ब्रेक के बाद। अच्छा चलें जी, नेस्टेड स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? चलें।